of the approximately 4,096 kilometer long India-Bangladesh border that runs through 5 states in India, approximately 3,200 odd kilometers have been fenced. The total unfenced area so far is about 865 kilometers, of which 450 kilometers of this unfenced border is being blamed on the West Bengal government. Union Home Minister Amit Shah focused on this 450 kilometers long unfenced border in Bengal, accusing the Mamata Banerjee government of obstructing the completion of fencing, including not providing land for the fencing and for creating border outposts for the border security force. The TMC cadre have been accused of physically obstructing the fencing work by sloganeering and hooliganism. The Mamata Banerjee government has hit back, accusing the centre of maligning the West Bengal government and passing the buck for failures of the centre and the BSF. Aishwarya Paliwal with our top story. बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे. Union Home Minister Amit Shah launched a frontal attack on the Trinamool Congress, accusing the Mamata Banerjee government of not cooperating with border fencing and TMC cadre obstructing border fencing along the India-Bangladesh border in Bengal. Shah said, despite multiple letters written to Bengal government, the state administration was not allocating land for border fencing. ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं. बंगाल सरकार भूमि नहीं देती. मान्यवर ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे. ये भूमि नहीं देते हैं. मैं मौन रहा. But there were more in store. Speaking in Lok Sabha on the Immigration and Foreigners Bill 2025, Amit Shah claimed TMC cadre physically obstructed the fencing process through hooliganism and shouting religious slogans. वहीं से घुसपैठ है जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है. और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण वही नागरिक बनते हैं. Shah gave details of the fencing work completed so far and the pending fencing work, directly blaming the Mamata Banerjee government of the delays and asked all the illegal infiltrators, be it Rohingyas or Bangladeshis, had Aadhaar card and voter identity cards made in 24 Parganas in Bengal. ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं. इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है. मान्यवर 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा. He said that Assam too remained an infiltration route when the Congress was in power in the state and insisted infiltration would stop in Bengal if BJP came to power in the state. The TMC hit back at the BJP, accusing the Home Minister of maligning the state. This is absolutely false propaganda by BJP and its leader Amit Shah. Infiltration of illegal Bangladeshi nationals and Rohingyas remains a major cause of concern for security forces. But the opposition claims the Union Home Minister's harsh remarks have been made with an eye on forthcoming assembly elections in Bengal. With Aishwarya Paliwal, Bureau Report, India Today.